So, what can you do with 8 hours on an early Saturday morning? We thought, while sipping chai at a tea stall in the outskirts of Bangalore. Out of our beds and out of our homes again, like nomads with minds itching to explore. An object of discussion among a hastily assembled clan of fond people with fueled up rides, just waiting to head out with barely enough time to explore, yet eager to maximize the early morning light filled with hope and optimism of an adventure. And the boys are here, Nitesh, Gogo and Kuldeep. We had with us 2 cars, both Tata Xenons, and 3 bikes, a Royal Enfield Meteor and 2 Royal Enfield Himalayans. The Bangalore rural region is actually quite interesting as the landscape is dotted with innumerable hills, rippling lakes, and green picnic spots. Being placed 3,000 feet above sea level on a plateau, the good weather extends around the city in any direction for a good 50 to 75 kilometers. We were now homing in on a location that we previously scouted and bookmarked, just 60 kilometers away from town. Ashish and Didi, being the explorers that they are, had done the scouting and bookmarking of this region on a previous drive. You can click the link that popped up on the screen to check out the initial scouting video. There were surely a couple of places worthy of peeking around. So after scouting the general area, we proceeded into the narrow paths of the wilderness. Off-roading may not actually be for everyone. It's different if you are driving a rally stage, but in normal circumstances, it requires patience, a lot of waiting around, and dealing with real-time issues that haven't been sorted out by roadway engineers and highway authorities. It means meeting plenty of dead ends, discussions, and actively risking your ride to get out of tough spots. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿತೀನಿ.
ಫೀಲ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ये दोनों का ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ತಾಗ ಹಲೋ ಎಷ್ಟು ರೆಡಿವಿ ಸಾಕು ಗುರು. ಹಾಂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಓ ಇಷ್ಟು ಗಲೀಜ್ ಐ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಲ್ वेडिंग फोटोग्राफर आपने कौन बोला मैं बोला तुम बोले हम बोले देखा हम बोल ये तो तुमसे ही हो पाएगा. नहीं नहीं बिहार का जो सॉन्ग है ना हम बोल ले कौन वो एक सॉन्ग है हम बोल ले करके उतना ही मिक्स का बीच में सही से निकाला है. थोड़ा बताओ ना क्या बताना है? अरे कहीं जाकर आ गए ना कहाँ जाकर आ गया अभी मैं इन शॉर्ट स्काउटिंग करके आया. हाँ तो इट्स अ डुएबल ट्रैक. वी कैन डू इट pretty good. ओके We got a lot of thorns. Just big thorns. ओके अरे बक्चौदी चाबी निकाल के डालना पड़ेगा भाई वही ट्राई कर रहा हूँ मैं भी. ATV ऑल टेरेन बक्चौदी पार्सल ऑफ हैविंग अ Xenon. या Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting down. तो फाइनली गेंडा और बाइसन का साथ मिल गया दोनों का जगह मिल गया बहुत दिन हो गया था करना है करके हो नहीं पाया था आगे रखा है क्या देखते हैं उसी के लिए निकले हम लोग. यही तो है मतलब ये तो एकदम से मतलब जंगल हो गया अच्छा नया मीटियोर थ्रॉटल एक्सेस थ्रॉटल देने का ही नहीं वही है कि यहाँ पर डीजल में की पॉइंट वही है कि एक्सेस थ्रॉटल कभी नहीं देना. two ways up here left or right we'll take left We'll take I left. think if you take right it will go back to the main road ठीक है, we'll take a left then. So what we are going to do now is we are about to test Meteor 350's off-road performance. This is some basic trail, basically nothing much, but there is a little inclination here, as you can see. So yeah, we are. Let's see. कोई कुछ बोल ही नहीं. सुपर गुड फीलिंग बस गोगो भाई बताएगा. फाइनली हाँ, ऑल टेरेन बकचोद हो गया आज. बढ़िया है. बकचोदी भी चल रहा है, ऑल टेरेन भी है. अभी और होने वाला है. रियल फन विल स्टार्ट सून. कॉल इतना जल्दी खत्म हो गया, बिजी मैन. हाँ अरे जल्दी खत्म हो सो इसका नाम है Xenon मंजा. मंजा. Xenon मंजा. जनन मंजा भाई. हेली पाट हेली. पहाड़ नहीं पाता है हाँ. हिंदी में बांब वो हिंदी कन्नड़ा मराठी सब बोलेगा अभी. ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ क्या बोलते हैं हम? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. अभी आ गया. ಕನ್ನಡ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ हाँ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ हम्म. ಬೆದರ್ ಚಲೋ ಐತಿ ಗಾಡಿನ ಚಲೋ ಅದಾವು और तुम? ಚಲೋ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ चलो. ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. और ये बाल? बाल तो मतलब है बाल उग रहे हैं. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ
अच्छा है, अच्छा है। I'll buy वेदर one भी in the अच्छा thing. है, राइड भी अच्छा है, बाइक भी नया है, मीटियोर है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तक के लिए। अब देखते हैं कितना अभी स्क्रैच आगे। लगेगा, क्या क्या होगा। ಇದು ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಬೈಸನ್ ಅಂತ ಇಟ್ವಿ. ಭैंಸ ಭೈಸ ಎಮ್ಮೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಗೆಂಡ. ಭೂಟಾನಿಂದ ಬರುವಾಗ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಬೈಸನ್ ಟೀತ್. बैटरी खत्म हो जाएगा इसका. भूटान स्टोरी ला दिया मतलब बैटरी खत्म होने वाला. ಆ ಟೀತ್ನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋದು. Cut. चलो. GoPro हैंग हो गया. नहीं चल रहा. हो गया ऐसा ज़्यादा नहीं. Wanted to show something interesting. एंटीना. तो ये लगाने से क्या होगा, जंगल में जितने भी जानवर हैं सबका सिग्नल मिल जाएगा. कौन सा कहाँ पे है, हाथी घोड़ा जान जो भी है, मनोज सब. जंगल में मतलब प्राणी हो गया. है मगर इतना भी बकचोदी नहीं तेरेगा भाई. क्या करेगा. थोड़ा आगे लेफ्ट ले लेना आगे से. The trail is getting tighter. I'm between bushes right now. Yes. All this testing and banter had gotten us deep into the wilderness and tripping on peacock feathers. We needed to get a move on, but wanted to get out to the main roads from another part of the woods without backtracking on the same route. This meant more scouting, a term used to check trails and pathways to determine if all your vehicles can safely pass through towards the intended direction. Bikes are actually great for scouting, as they require very less space to turn around in case the path is blocked. Lightweight bikes especially are even better, as they can literally be carried across blockages. Having cars meant that we needed to ensure adequate width and a clear enough path to exit the woodlands and get across to the main road. So the guys have showed through these bushes. It will be a little tough to go through this because of the thorns, as you guys can see. Let's see what can be done. How do they manage? यहाँ पे रहेगा, I'm sure रास्ता होगा. ये बना के रखा है ना. हाँ, वो गया देखने के लिए. पक्का रहेगा. Any luck? Yes, there is a trail, we can go that side. And रास्ता है उधर में. अच्छा, तो can we join the main road from Yeah, there? we can join the main road. Okay, ठीक है. We'll do that. We'll go and tell them.
आजा 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 आजा, अब ले 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 ले, रुक जा, थोड़ा और आ गया, थोड़ा और आ गया, आजा आजा आजा, सीधा ले, अब हाँ घुसा घुसा घुसा, हाँ आजा आजा, अब सीधा ले सीधा ले सीधा ले, हाँ जल्दी निकाल जल्दी निकाल, थोड़ा रेस देके निकाल ले, सीधा ले ले, स्टीयरिंग सीधा रख, सीधा ले 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 ले, आजा 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 आजा, पीछे जा पीछे जा पीछे जा, थोड़ा रेस देके आ जा, ठीक है, थोड़ा थ्रॉटल देके आ, थोड़ा जितना हो सके राइट में, हाँ आजा आजा, बस हो गया। ये साला गाड़ी ऐसे ही चलाता है पूरा, उसको कोई ये नहीं है। वो लिया ही उसके लिए। जाओ ना। बताओ भाई कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है यार, मतलब ये जो लास्ट में जो गाड़ी जो निकाला, वो जो अभी जो मंदिर के पास, अरे यार मतलब बहुत ट्रिकी सिचुएशन था, मगर अच्छा है कि थोड़ा टेक्निकल था, which is good, होना भी चाहिए, तभी तो मजा है ना। हाँ, और ये असली मजा इधर आया कि 3 लीटर और 2.2 का, तो जो इसका जो मेन चीज़ है कि जो टॉर्क इनफ टॉर्क जो 3 लीटर में जो है चढ़ के आ जाता है गाड़ी, 2.2 में थोड़ा हल्का सा मतलब दबाना ही है। 2.2 में गियर रेशियो थोड़ा डिफरेंट है, सेकंड में चढ़ता नहीं है, हाँ, फर्स्ट में डालते ही निकालना पड़ेगा। 3 लीटर में क्या, थर्ड गियर में निकल जाएगा। अरे इसमें ये तो मत सोचो है कि हम लोग टिपिकल ऑफरोडिंग कर रहे हैं, ये है मतलब ये भाई जो नॉर्मली जो मजा लेना है वो ले रहा है गाड़ी का, शुरुआत है, स्टार्टअप विद चल रहा है। हाँ। पीछे भी देखो गेंडा पेल के आ रहा है, गेंडा फॉर अ रीजन। हाँ, बंदा और गेंडा दोनों एकदम सिमिलर, दोनों का मेंटालिटी मैच हो जाता है। जैसे नितेश के लिए हिमालयन है, वैसे अद्वैत के लिए गेंडा है। अरे मजा आ गया मतलब जो संडे जैसे बीता यार, अच्छा है, मतलब एक मतलब क्या ना, वो एक अलग सा एनर्जी आ गया, मतलब ठीक है, देखते हैं अभी कैलाशगिरी पहुंच के, वहाँ तो मजा आएगा, मैं तो गया था लास्ट टाइम। हाँ, तो मेरे को भी फर्स्ट टाइम है, तो देखना पड़ेगा। होपफुली पीछे गेंडा लेके गया था, हाँ, अभी बाइसन का बारी है, आराम से चला जाएगा। हाँ, तो हिमालयन भी है मतलब जुड़ा है, वो हिमालयन और एक मीटियोर भी है। हाँ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हाउ इज मीटियोर परफॉर्मिंग ऑफ रोड, हाँ, सो लेट्स सी कैसा लग रहा भाई? अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया है। Having completed a good segment of the road already, we were not fully satisfied yet and began searching for another jaunt into the muddy trail. Not far ahead stood the little hillock of Kailasagiri, a location that was known to us and forever calling out. On our way, we came across a small detour to a little known Hanuman temple and so started our little escape on a muddy and gritty path cutting across wooded forests and dangerous cliffsides. वो जो लेफ्ट दिख रहा है, वो जो लेफ्ट है ना, हाँ, वो वाला लेफ्ट अभी हम लोग को लेना है। ओके, तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज हिमालयन का पीछे लगा लेता है, तो फिर आराम से ले सकते हैं वीडियो, वो गेंडा भी लगा। Talking of tough spots, we got to test the
Royal Enfield Meteor a fair bit on the trail, and we must say it surprised us quite a lot. The weight balance is very decent, allowing for a handleable ride. The low and mid-range grunt makes you want to spin up the rear wheel and really have fun. Although it is also very tractable and effortlessly takes on inclines with a steady right hand. The build quality seems to have gotten an upgrade too, and the Meteor doesn't rattle or lose its rear view mirrors on the ride. The energy produced by the engine seems to be well contained and intentionally directed, making it the surprise package of the lot today. A friendly reminder though to use appropriate tires if you do a lot of off-roading. Our test bike today is a road bike and was fitted with factory road tires, which performed exceptionally well. The black pickup, or Bison as it's fondly called by the owner, has a 2.2 litre diesel engine that delivers higher power and torque numbers when compared to the 3 litre Dicor engine of the silver pickup. So you can expect the former to keep its nose ahead on the road. Either Xenons are effortless cruisers and can hold the road well till around the 160 km per hour mark. The trio aspect of having a low center of gravity, long wheelbase and stiff suspensions lends itself well to storming on the highways. But where the Xenons take a hit is in the braking department, as without electronic aids, stopping a long, heavy vehicle can be quite a tricky experience during emergencies. While off the paved roads, having 4WD on a pickup truck serves really well, as there is very less traction for the rear wheel without adequate load weighing the back end down. Nonetheless, it is no slouch and a capable driver can manage even the 2WD beast quite well through the rough terrain. The quick yet steep climb got us significantly higher than the region, and the narrow path finally opened out to an eagle's eye view of the landscape. There we were, captured by the vastness beneath, stolen by the gusty winds, whistling and howling past our parked bikes. A perfect place to soak in the atmosphere, to debrief and laugh among like-minded friends.
डरना मत हाँ। The riding voice, the voice of riding, is a real deal. So we did an off-ride on Meteor. That's a Supernova, Meteor 350. The bike is good. It's actually not a Royal Enfield. It has done, there's a lot of changes on the bike. This one is not like a typical Royal Enfield bike. It's a little different. There are a lot of considerable changes on this. The power on the mid-range is amazing. I mean, we did an incline right now and it started cruising. Plus I truly like the tires. I mean, it has amazing road grip. The clutch is smooth, the power is linear, everything is good on this bike. Super. So coming back to what one can do on a Saturday morning, give us an idea कि तुम लोग क्या करते हो? Go ahead, use the comment section. 70 odd subscribers का enormous base होते हुए भी, we shall read all the comments. पक्का. Stay safe and happy road tripping, guys. There's a lot of changes on the bike. The engine is amazing. क्या था ये?